बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स। Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Drug abusers, therefore, must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग का मुताला करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोसेस, अमल, प्रोसीजर, सिस्टम, सपोर्ट, ताउन, हेल्प, असिस्ट और यू कैन से एड। गाइडेंस, रहनुमाई, डायरेक्शन, प्रोवाइडेड, मुहैया हुई, सप्लाइड। ड्रग एब्यूज़र, नशेई, नशे का आदी, ड्रग एडिक्ट। क्योर, इलाज, रेमेडी और यू कैन से मेडिकेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज अवेलेबल, दस्तयाब, असेसिबल। इन्वॉल्व, शामिल करना, इंक्लूड और यू कैन से कंटेन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, शनाख्त, डिटेक्शन। टीम, अमला, स्क्वाड। सर्टिफाइड, मंजूर शुदा, अटेस्टेड, वेरीफाइड। एंड द लास्ट वर्ड इज रैपिड, तेज, फास्ट और क्विक। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। पहली लाइन है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस। बहाली सेहत के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स, नशेबाजों की सेहत की बहाली के अमल के लिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स। नशेबाजों की सेहत की बहाली के अमल के लिए बहाली सेहत के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस, मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। इन मराकज़ में इन लोगों को मिलती है। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई मिलती है। ड्रग एब्यूज़र्स, देयरफॉर, इसलिए नशेबाजों को मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, मुनासिब और मुस्तनिद बहाली मराकज़ में ले जाना चाहिए। वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर, जहाँ मुनासिब इलाज मुआलजा इज़ अवेलेबल फॉर दैम, उनके लिए मयस्सर होता है। ड्रग एब्यूज़र्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर दैम। इसलिए नशेबाजों को मुनासिब और मुस्तनिद बहाली के मराकज़ में ले जाना चाहिए, जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज मुआलजा मैसर होता है। However, this requires, ताहम ज़रूरत है किस चीज़ की? रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग एडिक्शन, नशे के मारे लोगों के मसले की फौरी शनाख्त की। रैपिड आइडेंटिफिकेशन मीन फौरी शनाख्त। एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम्स, और इनके मुकम्मल ताउन की। किस चीज़ के साथ? विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स, मराकज़ की टीम के साथ। यानी कि जो उन मराकज़ के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अगर मुकम्मल ताउन होगा और रैपिड आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी तो फिर इस चीज़ का इलाज करना काफ़ी आसान है। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction
and full cooperation of the victims with the team of these centers. ताहम नशे के मारे लोगों के मसले की फौरी शनाख्त और इनका मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल ताउन की ज़रूरत है। पैराग्राफ के ट्रांसलेशन के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट लाइन इज़ rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Simple English है, the hospitals and rehabilitation centers are the best places to examine the patients and cure their disease. तो यहाँ पर हमने रिकवरी के लिए क्योर का वर्ड यूज़ किया और एडिक्ट्स के लिए पेशेंट्स का वर्ड यूज़ किया और हमने इसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट किया। The next line is complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Means these centers give them proper medical treatment and guidance. The next line is drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है therefore the patients should be taken only to those hospitals and centers that are qualified for providing proper medical treatment and where all medical facilities required for the treatment of addict are available. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. Two things are essential to be done for the proper treatment of the patient. Firstly, the diagnosis of the disease and secondly, cooperation of the patient with the doctors and the staff of hospital. So dear students, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4 की सिंपल इंग्लिश भी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम इसके अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन है What treatment is available at the rehabilitation centers for drug victims? बहाली मराकज़ में नशे के आदी लोगों के लिए कौन सा इलाज दस्तयाब है? आंसर इज प्रॉपर काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल at the rehabilitation centers for drug victims. बहाली मराकज़ में नशे के आदी लोगों के लिए मुनासिब रहनुमाई और इलाज मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4 भी अपने अख्ताम को पहुँचता है।